Hello and welcome you all. Dear students, this topic is electric flux density, that is D bar. It is the topic from the subject EFT. I have drawn one diagram. Initially, these are actually two spheres. So initially there is only one sphere of radius a. जैसे ये separately मैंने देखा है, ये suppose सिर्फ पहले एक ही sphere है जिसका radius a है. So this is the inner sphere. I mean initially there is only one sphere. Everywhere on the outer surface of this sphere the charge plus q is deposited. उसके बाद क्या करेंगे? This sphere will be enclosed in some another bigger sphere and the structure is kept as it is for some time period. This outer sphere is of radius b. पहले आउटर स्फीयर के अंदर मतलब आउटर स्फीयर पे कोई भी चार्ज नहीं है, एक सिर्फ इनर स्फीयर था जिसके सरफेस के ऊपर चार्जेस थे. वी हैव क्लोज्ड दिस इनर स्फीयर इन सम अनदर बिगर स्फीयर. आफ्टर सम टाइम इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट same amount of charge, that is q, gets developed on the outer sphere, but this value, I mean its value is given as minus q. ये इस डायग्राम में देखा है, पहले प्लस q था इनर स्फीयर पे. आफ्टर सम टाइम इनिशियली देयर वाज नथिंग ऑन द आउटर स्फीयर. हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया, उसके ऊपर चार्जेस डिपॉजिट किए और वो स्फीयर दूसरे स्फीयर के अंदर इंसर्ट किया. Outer sphere was not having any charge initially, but it has been observed that after some time same amount of charge but having opposite polarity, that is minus q, gets deposited on the outer sphere, I mean on the inner surface of outer sphere. How this happened? Before that ये मैंने plus q बताया था. Why it is minus q? Very simple. It's a convention. Inner sphere is a donor, so positive charge. Outer sphere is an acceptor, so there is a negative sign. So ideally same amount of charge but having opposite polarity gets developed on the outer sphere. Why this happened? Because we are talking about a charge. Charge contains certain energy. Energy is radiated in all possible directions. तो ये जो lines black lines से black ink से मैंने बनाए हैं, ये जो lines है, these lines are energy lines radiated from each charge. So these energy lines try to travel in all possible outward directions, but it is enclosed by some another sphere. So these energy lines gets deposited on the outer sphere. These energy lines are called as flux lines. Notation of flux is psi. It is also read as electric flux, and density of all such flux lines is called electric flux density, which is denoted by D bar. This particular experiment is called it is known as the Faraday's experiment of two conducting or two concentric spheres. All right. So we know that ideally जितने flux lines है that should be equals to number of charge enclosed, that is psi is equals to q. Actually this is the statement of Gauss law which we are going to study later. Okay. Now this flux density is ये जो सब lines है, it is called it is known as electric flux lines. The density of these flux lines is called as electric flux density. Do remember an important relation. Electric flux density D bar is related to electric field intensity as D bar is epsilon 0 E bar, where epsilon 0 is the permittivity of free space. Now to get this concept more clear, we will solve few numericals related to this electric flux density. Now let us solve a typical numerical related to calculation of electric flux. The question is, calculate the flux enclosed by a sphere of radius 4 meter centered at origin. मतलब एक sphere दिया है जिसका radius 4 meter है and whose center is at origin. See, for solving such numericals we need to draw the proper diagram. So let me first draw the diagram for given things. We know that as per usual convention, this is x-axis, y-axis, z-axis. Given structure is a sphere whose radius 4 meter centered at origin. मतलब origin मतलब ये point है, यहाँ पे हम लोग एक sphere draw करेंगे whose center is at origin. Actually it seems like a circle, but this is a sphere क्योंकि हम लोग 2 dimension में draw कर रहे हैं. Sphere is a 3-dimensional structure. So this is the sphere whose radius is at origin. Then
this is the given structure. We have to calculate the flux enclosed by this structure due to following structures. One first structure is Q, that is charge, point charge 6 microcoulomb located at origin. तो यहाँ पे origin मतलब ये, यहाँ पे एक Q है जिसका वैल्यू है 6 microcoulomb. Second, a line charge of 180 nanocoulomb along x axis. ये x axis है. So line charge is along x axis like this. ये infinity तक है, इसलिए मैं पूरा ये डायग्राम ऐसे extend करता हूँ. This is the line charge rho L, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 180 nanocoulomb per meter. It should be actually per meter. So this is 180 nanocoulomb per meter. This is the value of rho L. Then third, surface charge of 25 nanocoulomb per meter square in z is equals to 0 plane. अब देखो सरफेस चार्ज कैसे ड्रॉ करना है. सरफेस चार्ज मतलब एक प्लेन ड्रॉ करना है, and it is, this plane is already given as z is equals to 0 plane. Recall the things what we learned earlier. z is equals to 0 plane मतलब xy plane. तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये ऐसे xy प्लेन में एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ like this, and this is the structure in xy plane. So this is having some surface charge density whose value is rho s is equals to 25 nanocoulomb per meter square. So this is the diagram which we have drawn related to the given information. Keep in mind ये diagram बहुत important है because from this diagram we are going to apply the logic and solve this numerical. How to do the calculation? Do remember the basic things. Flux is denoted by psi and flux is ideally same as Q. Q is the charge enclosed. What we have learned in Faraday's experiment, जितना चार्ज है उतने फ्लक्स लाइंस बाहर आएंगे. सो साई इज इक्वल्स टू क्यू. अब अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करना है. फर्स्ट पार्ट, फॉर फर्स्ट पार्ट क्यू इज 6 माइक्रोकूलम. ये क्यू है, इट इज कंप्लीटली एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर. हमें क्या करना है, स्फीयर के अंदर कितना फ्लक्स है वो कैलकुलेट करना है. हर एक स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे, फिर तीनों का एडिशन करेंगे. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज पॉइंट चार्ज. उसका वैल्यू है 6 माइक्रोकूलम. वेरी सिंपल, ये स्फीयर के अंदर पूरा ये चार्ज इंक्लूडेड है, मतलब दिस चार्ज इज एंटायरली इंक्लूडेड इनसाइड द स्फीयर एंड वी हैव द फॉर्मूला psi is equals to q. Let us denote this flux by psi1 simply because it is due to first structure. So psi1 is equals to value of q which is 6 microcoulomb, same as value of q 6 microcoulomb. तो अगर नैनो कूलम्स के टर्म्स में लिखना है, सो इट इज 6000 नैनो कूलम. So this is the answer of first part. I mean we have calculated value of psi due to first part. Second part, अब देखो second और third बहुत important है. Second part, line charge of 180 nanocoulomb per meter along x axis. ये डायग्राम हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है. Do remember ये जो स्पीयर है इसका रेडियस है 4 मीटर, मतलब यहां से यहां तक जो वैल्यू आएगा ये 4 मीटर है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस आएगा वो 4 मीटर है. डोंट थिंक अबाउट प्लस और माइनस, वी आर सेइंग इट इज अ डिस्टेंस. यहां से यहां तक 4 मीटर, यहां से यहां तक 4 मीटर. अब देखो पूरा लाइन चार्ज तो इट इज एंटायरली अलोंग एक्स एक्सिस, बट वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट इज एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर. तो ये कैसे कैलकुलेट करना है, ये स्फीयर है, इसके अंदर यहां से यहां तक चार्ज आएगा, मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. इसका वैल्यू, इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 8 मीटर्स. नाउ रिकॉल द बेसिक थिंग. रोयल इज डिफाइंड एज Q by L. Q मतलब चार्ज, L मतलब लेंथ. सो Royal is Q by L. We want to calculate Q because Q is same as psi. Therefore, I can write Q is equals to Royal into L. Value of Royal is given in the question, that is 180 nanocoulomb. So it is 180 nanocoulomb per meter into length. Length मतलब ये पूरा जो स्पीयर के अंदर इतना पार्ट इंक्लूड हो रहा है लाइन चार्ज का, उतने पार्ट का लेंथ लेना है, मतलब into 8. So this answer 180 into 8 will be 1440 nanocoulomb. So let us denote it by value psi2.
तो यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ. सो आंसर ऑफ सेकंड पार्ट that is psi 2 is equals to 1440 nanocoulomb. This is answer of second part. Now for the third part. Third part is surface charge of 25 nanocoulomb per meter square in z is equals to 0 plane. ये डायग्राम ऑलरेडी बना है. अब थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना है. गिवन स्ट्रक्चर इज अ स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन. एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, बिकॉज इट इज z इज इक्वल टू 0 प्लेन. सरफेस मीन z इज इक्वल टू 0 प्लेन. एक स्फीयर है हुज सेंटर इज एट ओरिजिन और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसका इंटरसेक्शन लेना है हमें. एक स्फीयर और हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसका इंटरसेक्शन आएगा अ सर्कल एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल विल बी, आई विल डिनोट दिस रेडियस बाय r. r will be equals to 4 meters. देखो एक स्पीयर है, मतलब it is like a cricket ball and you are taking intersection with some plane, with some horizontal plane, so intersection will be a circle. So this circle, we already know the radius of this circle which is equals to 4 meter. अब इसका जो वैल्यू है, मतलब we need to calculate the value of psi 3, that is flux enclosed due to this surface. लेकिन ये r is equals to 4 meter या रेडियस हो गया. we need to calculate first the surface area. let us denote surface area by s. is surface area of the circle, so it is pi r square. value of r is 4, so it is 16 pi. Now same like this, what we read, what we discussed, q is rho l into l. जैसे सरफेस का केस है तो ये सिमिलर फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे, q is equals to rho s into s, where s is the surface area. value of rho s is 25 nanocoulomb per meter square, so it is 25 into 10 raised to minus 9 into 16 pi, that is value of s into 10 raised to minus 9. And this value of q will be, I will write the answer over here. This is third part and we know that value of q is same as value of psi. Let us denote it by psi 3. So it is 16 into 25, that is 400 pi nanocoulomb. So you will have to convert it like this, 400 into 3.14 value of pi. So answer of psi 3 will be 1256.63. So this is the final answer of psi 3 in terms of nanocoulomb. So what we did, we calculated the value of psi due to each structure separately. Final answer, that is total psi, will be addition of these all these answers. So it is 8696.63 nanocoulomb. This is the final answer of value of psi enclosed by the given sphere due to all these structures. Consider a numerical. A point charge of 30 nanocoulomb is located at origin, while plane y is equals to 5 carries charge of 10 nanocoulomb per meter square. मतलब ये जो सेकंड है प्लेन, इट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. एक पॉइंट चार्ज है which is located at origin whose value is 30 nanocoulomb. Determine d bar. D bar is electric flux density at a point 043. First let us draw the diagram. अब देखो एक वक्त एक ही कैलकुलेशन करना है. There are two structures. One is point charge located at origin. उसका अलग से पहले उसका कैलकुलेशन करते हैं. So as usual we will draw the coordinate system. We know the rules. This is x-axis. This is y-axis. Vertical axis is z-axis. पॉइंट P जहां पे कैलकुलेशन करना है, ये पॉइंट है P043, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है. 0 मतलब ओरिजिन यहाँ पे. सो x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4 मतलब पॉजिटिव y एक्सिस पे यहाँ सपोज y इज इक्वल्स टू 4 है. रिकॉल द रूल्स. हम लोग क्या करते हैं, x और y का इंटरसेक्शन लेते हैं. x तो 0 है, y 4 है, तो इंटरसेक्शन नेचुरली इसी पॉइंट पे आएगा. z x y z कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं. सो वैल्यू ऑफ z इज 3. रूल क्या है, जो z का वैल्यू है हमेशा
वहां पे z एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, z इज इक्वल टू +3, तो सपोज यहाँ पे +3 है, समवेयर हियर आई विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन लाइक दिस। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x और y का, ये इस पॉइंट तक एक्सटेंड करना है, सो यू विल गेट अ पॉइंट P whose coordinates are 0, 4, 3। हमने x और y का इंटरसेक्शन लिया, यहाँ पे आया, z का जो वैल्यू था वहां परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये जो पॉइंट था, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x और y का, वो ऊपर z के लेवल तक एक्सटेंड करना है। सो दिस इज पॉइंट P 0, 4, 3। नाउ इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन्ड चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, मतलब 0, 0, 0। ये सपोज चार्ज Q है, कैलकुलेशन हमें पॉइंट P पे करना है, सो ऑलवेज एंड ऑलवेज ड्रॉ अ वेक्टर एंडिंग टुवर्ड्स पॉइंट P। जिस पॉइंट पे कैलकुलेशन करना है वहीं पे वेक्टर एंड होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर शुड बी टुवर्ड्स दैट पॉइंट। सो दिस इज R bar, this vector is R bar. Dear students, we have already solved some numericals related to calculation of E bar due to point charge, line charge and surface charge separately. Please watch those videos because these videos, this part is interlinked with the earlier lectures. Alright. So this is, let us say, vector R bar. मैंने formula लिख के रखे हैं. Due to point charge, D bar is Q by 4 pi R square A R bar. So let me write this formula once again. So this is D bar, not E bar. This is D bar, which is electric flux density, is Q upon 4 pi R square A R bar. Now from this, let us first calculate value of vector R bar. Recall the rules. R bar मतलब ending minus starting. तो कैलकुलेशन कैसे करना है? पहला कोऑर्डिनेट यहाँ का देखना है, 0 minus 0 मतलब 0 आएगा, 0 A x bar. ये 0 है तो you can well skip, so I am not writing this. Then 4 minus 0 मतलब 4 A y bar. देखो सीक्वेंस याद रख लो, कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y z। एक 0 था, यहाँ पे भी x y z है, 0 minus 0 0 हो गया, y 4 है, 4 minus 0 4, y से रिलेटेड डायरेक्शन a y bar, z का वैल्यू है 3, 3 minus 0, so plus 3 a z bar। z कोऑर्डिनेट से रिलेटेड डायरेक्शन है a z bar। दिस इज द वैल्यू ऑफ r bar। अब r इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये डायरेक्शन स्किप करना है, 4 स्क्वायर मतलब जो मैग्नीट्यूड बचता है 4 स्क्वायर, स्किपिंग द डायरेक्शन, टेक स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर ऑफ दिस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो इट इज 16 प्लस 9 दैट इज रूट 25, मतलब इसका वैल्यू आएगा 5। एंड वी हैव a r bar is equals to r bar upon r, so which is equals to 4 upon 5। देखो r bar 4 a y bar है पहला टर्म, ये 5 as it is रखा मैंने, 4 upon 5 a y bar plus 3 by 5 a z bar। This is the equation of a r bar। We have to put all these values in the formula of d bar, so I will get d bar is equals to value of q is 30 नैनो कूलम, मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 9। 1 नैनो कूलम इज 10 रेज़ टू माइनस 9 कूलम्स। फॉर्मूला देखो, q अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, r का वैल्यू है 5 तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 स्क्वायर इंटू ए आर बार मतलब ये पूरा इक्वेशन एज इट इज, 4 बाई 5 ए वाई बार प्लस 3 बाई 5 ए जेड बार। अब इसका कैलकुलेशन करना है, लेट अस सॉल्व दिस ऑन द कैलकुलेटर। अब सिर्फ इतना पार्ट कैलसी पे सॉल्व करेंगे तो मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है सिर्फ इतने पार्ट का, इट इज 9.54 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11। फिर क्या करना है, ये जो वैल्यू है 9.54 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11 इंटू 4/5 करना है। ए वाई बार डायरेक्शन है एज इट इज रखा है यहाँ पे, तो ए वाई बार एज इट इज रखा है, ये वैल्यू मतलब 9.54 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11 इंटू 4/5 ये करना, ये आंसर आएगा। फिर सेम थिंग 9.54 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11 इंटू 3/5, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आएगा। ए जेड बार एज इट इज रखना है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी बार ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो डू रिमेंबर, हम लोगों के पास दो चीजें हैं,
वन इज पॉइंट चार्ज, सेकंड इज सरफेस चार्ज, ये एक कैलकुलेशन होगा. सो लेट अस डिनोट इट बाय D1 बार बिकॉज दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ ओनली फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड पार्ट देख लो. In the second part, some surface charge is given. So, given surface charge, it is mentioned like this. While a plane y is equals to 5 carries charge 10 nanocoulomb per meter square. इसका मतलब है एक प्लेन दिया है जो y is equals to 5 पे है. By default, ये प्लेन इन्फिनिटी तक है ऐसा कंसिडर करना है by default. अब पहले पॉइंट चार्ज का डायग्राम था. Let me remove this value of point charge and everything. So point P, I am keeping it as it is. P is the point where we have to do the calculations. Okay. अब plane का क्या वैल्यू दिया? I mean surface charge का क्या वैल्यू दिया है? It is having the value 10 nanocoulomb per meter square and it is located at y is equals to 5. इसका क्या मतलब है? ये y axis है. Y is equals to 5 is somewhere here. हमेशा जो वैल्यू एक देते हैं प्लेन के लिए, सरफेस के लिए, उस वैल्यू पे एक प्लेन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर एक्सिस. So this is the plane which I have drawn, which indicates surface. Actually, this surface is tending towards infinity. Convention is I have to draw the plane like this. It is at y is equals to 5 and its value is given as rho s is equals to 10 nanocoulomb per meter square. अब देखो, we have the formula of d bar due to rho s. It is rho s upon 2 a n bar. Do remember a n bar is generalized direction. हमने already surface के numerical solve किए. What we learned in those numericals. a n bar एक generalized direction है. ये प्लेन मैंने इस y एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. जो प्लेन जिस एक्सिस को परपेंडिकुलर है, यहाँ पे y एक्सिस को परपेंडिकुलर है. सो direction of E bar or D bar is always and always along y axis, that is AY bar. Question arises plus AY bar or minus AY bar. Simple trick मैंने already बताया है. जो पॉइंट है P वो देखना है compared to this given surface. Do remember ये surface infinity तक है. Compared to this given surface, this point P is at LHS side. That means it is at negative y axis. नेगेटिव y एक्सिस है, इसलिए इसका डायरेक्शन माइनस ए वाई बार लेना है. सो लेट मी मॉडिफाई दिस इक्वेशन. आई विल राइट इट एज माइनस ए वाई बार. ये पार्ट बहुत सिंपल है, सिर्फ रो एस का वैल्यू पुट करना है. सो आई विल गेट रो एस इज 10 नैनोकूलम, मतलब 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 अपॉन 2. डायरेक्शन इज माइनस ए वाई बार. सो सिंपली इट इज 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 9. Direction minus AY bar. This is the answer of second part. So I will denote it by D2 bar. अब देखो D1 bar फाइनल आंसर कैसे कैलकुलेट करना है? फाइनल आंसर D bar is D1 bar plus D2 bar. Let us perform addition of these two answers. I mean answers of these two parts. So after adding these two answers, I mean by performing D1 bar and D2 bar, you will get minus 4.92 AY bar प्लस 0.057 AZ बार नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर. मतलब ये आंसर ऐसे आ रहा है. दिस 4.92 इंटू 10 रेज टू माइनस 9, 0.057 इंटू 10 रेज टू माइनस 9. तो 10 रेज टू माइनस 9 मतलब नैनो कूलम. बेसिक यूनिट डी बार का होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ऐसे न्यूमेरिकल्स में वेरिएशंस क्या क्या आ सकते हैं? बहुत सिंपल है. ये मैंने पॉइंट और सरफेस के लिए कंसिडर किया है. इट कैन बी पॉइंट और एंड लाइन चार्ज. सो लाइन चार्ज का तो ऑलरेडी हमने ई बार का कैलकुलेशन किया है. डी बार के लिए ये फॉर्मूला है. कैलकुलेशन रिमेन सेम. सिर्फ देखो ऑब्जर्व कर लो, यहाँ पे सिर्फ इप्सिलॉन नॉट का टर्म नहीं है, बाकी फॉर्मूले एज इट इज है. सो दिस इज द वे हाउ यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ डी बार. So that's it for today's session. So thank you. Thanks a lot for watching this video.